Okay, Assalamu alaikum students. So let's get started with IGCSE Physics, May June 2022, Paper 2, Variant 1. This is a 45 minutes ka paper. Let's get started with it. This is an MCQs based paper, so let's start with it. Acha ji, let's see this. Which measuring devices are most suitable to determine the length of a swimming pool and the thickness of an aluminum foil? Obviously, the length of a swimming pool is a larger thing. You can determine it with a टेप मेजर बेटा लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल एक लार्जर एरिया है यू कैन से लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल हैज अ लेंथ लेट मी चूज अ गुड इनफ पेन हियर the length of the swimming pool is greater than 1 meter. Anything greater than 1 meter will be measured using a tape measure. कोई भी लेंथ 1 मीटर से ग्रेटर आप टेप मेजर से मेजर करोगे ए एंड डी गेट्स कैंसल्ड आउट. How will you measure the thickness of an aluminum foil? Using a micrometer screw gauge. P is your answer. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. अच्छा जी. A train traveling at 40 meters per second. This is your speed. Takes 2 seconds to pass the man. What is the length of the train? Distance निकालनी है. Distance is equal to speed into time. Speed क्या है 40, time क्या है 2. The distance comes out to be 80 meters. D is your answer. आगे बढ़ते हैं. A speed time graph, okay, is used to describe the motion of an object, which quantities are calculated from the gradient of the graph and from the area under the graph. बेटा हमेशा याद रखो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट एक्सेलरेशन सी ओ डी कैंसिल आउट एंड द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ए इज योर आंसर. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. On moon, all the objects fall with same acceleration. Which statement explains this? भाई मून पे सारे ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ फॉल करते हैं. Which statement explains this? On moon, all objects have the same weight. No. The moon has a smaller gravitational field strength than Earth. No. The weight of the moon is directly proportional to its mass. C is your answer, sir. What do you mean by that? By this I mean, have we studied this formula? W is equals to mg. The gravitational field strength of any planet, any moon is equals to weight divided by mass. If your weight doubles, your mass will also double. 2w divided by 2m again. Your gravitational field strength or acceleration will be w over m. तो बेटा जिस प्रोपोर्शनैलिटी या जिस फैक्टर से वेट बढ़ेगा उसी फैक्टर से मास बढ़ेगा. हेंस योर एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी सेम. सी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स 30 cm क्यूब ऑफ लिक्विड. दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. Some more of a liquid is added until the liquid reaches 50 cm cube mark. This is your final volume. The reading on the balance is 30 gram. This is your mass. You have to calculate the density. Density किस तरह निकालेंगे? Density is equals to mass over volume. What is your mass beta? 30. What is your volume? Final minus initial, that is 20. Density comes out to be 1.5 grams per cm cube. C is your answer. Let's further move ahead. An object on the end of a string moves in a clockwise circular path. Okay, so you are moving in a clockwise circular path. The diagram shows the object as viewed from above. Okay, what is the direction of a resultant force on the object when it is in the position shown? बेटा जब भी आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है वेयर विल द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. ए इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. अ बीम इज पिवटेड एट वन एंड. दिस इज योर पिवट. ओके. The beam weighs 6 Newton and its weight act at a point 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट. अच्छा जी बीम का जो वेट है वो 6 न्यूटन है और वो एक्ट कर रहा है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट. A force of 4 Newton is applied to the beam causing it to balance. बेटा जब भी आपकी बीम बैलेंस हो जाएगी that means anti-clockwise movement will be equal to clockwise movement. करंटली अगर आप रियलाइज करो द 6 न्यूटन का वेट इज कॉजिंग अ मूवमेंट इन विच डायरेक्शन? द 6 न्यूटन का वेट इज कॉजिंग अ मूवमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फोर्स इनटू द डिस्टेंस. 6 into the distance from the force to the pivot, that is 0.4 meters.
बताओ भाई, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? 2.4 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज मोमेंट आपके पास आ गया 2.4 न्यूटन मीटर। नाउ वेयर शुड यू अप्लाई अ फोर्स? आप फोर्स किस तरह अप्लाई करोगे टू बैलेंस दिस बीम हॉरिजॉन्टली? बेटा अगर आपने बीम को हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट आपका 2.4 है। व्हाट शुड योर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बी? अगर आप किसी तरह 2.4 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करा लो, इफ यू कैन समहाउ जनरेट अ 2.4 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, द बीम विल बैलेंस। लेट्स ट्राई आउट एवरी ऑप्शन। You have a force of 4 Newton acting vertically downward at 20 centimeters to the left of x. अच्छा जी, लेट्स से आपके पास 4 न्यूटन की फोर्स है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एक्स। कैन यू रियलाइज ये वाली फोर्स भी क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करेगी? आई डोंट नीड क्लॉकवाइज मोमेंट बेटा, अगर मैंने बीम को बैलेंस करना है आई नीड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दैट टू ऑफ 2.4 न्यूटन मीटर। तो 4 न्यूटन वाली फोर्स को तो कैंसिल कर दो। अब देखो ऑप्शन बी को, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एट 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ एक्स। अच्छा जी, 20 सेंटीमीटर्स टू द राइट ऑफ एक्स हमने वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगा दी 4 न्यूटन की। दिस विल ऑल्सो टर्न यू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो नॉट नीडेड। बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मोमेंट चाहिए ही नहीं। यू नीड मोमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सी को ट्राई करते हैं। You need a 4 Newton की force acting vertically upward 20 centimeter to the left of x. 20 centimeter to the left of x, something like this. Yeah, this is generating anti-clockwise moment. देखो ये anti-clockwise moment तो generate कर रही है ये वाली force. Okay, so let's calculate the anti-clockwise moment that this force generates. Pivot से लेकर force तक का distance क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, because total distance क्या है? 40 सेंटीमीटर। 40 में से ये 20 माइनस कर दिया, दिस इज द रिमेनिंग 20। दिस इज 0.2 meters. Can you calculate the anti-clockwise moment? 4 into 0.2, that is roughly 0.8 न्यूटन मीटर। हमें 0.8 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज नहीं चाहिए। वी नीड अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट of how much? We need an anti-clockwise moment of 2.4 Newton meter. So let's try out our last option, that is option D. Option D को correct होना चाहिए वरना ये सवाल गलत हो जाएगा. Let's see. Let's say you have a 4 Newton की force here acting to the right of x. What is the distance from the pivot? 40 centimeter, 20 centimeter. The distance from the pivot is 60 centimeter. I think we will get the correct answer here. This force is turning you in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise moment निकाल लोगे 4 into 0.6, that comes out to be 2.4 Newton meter. क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बेटा 2.4 न्यूटन मीटर आ रहा है इफ यू आर कंसिडरिंग ऑप्शन डी। और आपने ऐसा ही तो करना था। यू नीडेड एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ 2.4 न्यूटन मीटर टू बैलेंस द सिस्टम आउट। ओनली ऑप्शन डी इज प्रोवाइडिंग दैट। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑन द डायग्राम शोन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू वेक्टर्स? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? This is 6 Newton, this is 8 Newton. If you calculate the resultant, how will you do that? This is your head of the vector, this is your tail of the vector, this is your tail of the vector, this is your head of the vector. Can you realize both the tails are connected together? Head to tail rule is not being satisfied. तो हम क्या करेंगे? We will take the 8 Newton vector towards the top side. Like this. Okay, this is your 8 Newton vector. This is your head, this is your tail, this is your head again. Can you realize head and tail are connected together? हाँ जी, head tail connected together है. Now you can mark the resultant vector. Resultant vector will be from the tail towards the head. This is your resultant vector. This is 90 degree. Can you calculate the resultant vector? Yes. 8 का square plus 6 का square is equals to the resultant का square. Which formula I have applied? Pythagoras theorem.
Resultant is equals to 8 square plus 6 square. Resultant comes out to be 10 Newton. C is your answer. आगे बढ़ते हैं. Three situations are listed. Okay, there are three situations. An object has a resultant force acting on it. An object experiences an impulse. Okay. An object is decelerating. In which situation is the momentum of the object changing? बेटा किस situations में आपका momentum change कर रहा है? Okay. So if a resultant force is acting on you, what is the formula of resultant force? Change in momentum over change in time. If a resultant force is acting on you, your momentum will change. तो option A तो correct है. An object experiences an impulse. What is the formula of impulse? Impulse is equals to change in momentum. If there is an impulse acting on the object, there will be obviously change in momentum. An object is decelerating. बेटा change in momentum का formula क्या होता है? Mass into change in velocity. If you are decelerating, your velocity changes. If your velocity is changing, either increasing or decreasing, your momentum will also change. D is your answer. तीनों सिनेरियोज में आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है बेटा. लेट्स मूव फर्दर. A ball of mass 0.1 kg is moving forward at a speed of 0.5. A second ball of mass 0.1 kg is stationary. The first ball strikes the second ball. The second ball moves forward with a speed of 0.5. What is the speed of the first ball after the collision? आपने स्पीड निकालनी of the first ball after the collision. How will you do that? First of all, before collision or after collision की diagram बना लो बेटा. Let's draw the diagram of before collision. Okay. Before collision, you have a ball of mass 0.16 kg. This is moving forward with a velocity of 0.5 meters per second. Then you have a second ball of 0.1 kg. That is stationary. अच्छा जी, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है बेटा? इफ यू रियलाइज आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है शहजादों? आफ्टर कोलिजन, इफ आई मेक द डायग्राम, बेटा आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? कैन यू रियलाइज? आफ्टर कोलिजन द सेकेंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 0.5. अच्छा, ये जो सेकेंड बॉल है वो मूव फॉरवर्ड कर रही है विथ अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड. और हमें फर्स्ट बॉल की स्पीड निकालनी है. वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल, दैट इज दिस 0.16 kg वाली बॉल की स्पीड कैलकुलेट करनी है. हाउ विल वी डू दैट? We will simply say that the total momentum before collision is equals to the total momentum after collision बेटा. Total momentum before collision क्या होगा? 0.16 into 0.5. 0.16 into 0.5 plus 0.1 into 0. What will be a total momentum after collision? 0.1 into V plus 0.1 into 0.5. Can you calculate the answer? ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी. 0.16 into 0.5 क्या आंसर आएगा? 0.08 is equals to what? 0.16 V plus 0.1 into 0.5. This comes out to be what? 0.05. इसको दूसरी साइड पे ले आओ. 0.08 minus 0.05, 0.16 V. आंसर क्या आ जाएगा? 0.03, 0.16 V. 0.3 divided by 0.16 is equals to your velocity. Let's calculate this. Answer of velocity क्या आ गया भाई? 0.19 meters per second. B is your answer. The answer of 10 is B. सर आपने किस तरह निकाला? बेटा बेसिकली मैंने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो बना लिया. Then I applied principle of conservation of momentum. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Before collision, you have a mass of 0.16 kg moving towards the right with a velocity of 0.5 and a mass of 0.1 kg at rest. तो इसकी velocity 0 होगी. After collision, your 0.1 kg का mass is moving with a velocity of 0.5. The 0.16 kg का mass is moving with an unknown velocity v. Calculate कर लो velocity v comes out to be 0.19. अब आगे बढ़ते हैं.
A mass hangs vertically from a spring. Always remember, whenever you are hanging from a spring, there will be elastic potential energy. क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्प्रिंग जब भी आएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होंगी. ओके, द मास इज रेज टू अ पॉइंट, दैट मीन्स देयर इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इट इज रिलीज. द मास ऑसिलेट्स, इसका मतलब यू हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल रिपीटेडली बिटवीन पॉइंट पी एंड अ लोअर पॉइंट क्यू, which energies alternatively increase decrease throughout the oscillations. I could have highlighted elastic potential energy due to the spring. देखो जब भी spring आएगा there will always be elastic potential energy. You are raised to a height, that means gravitational potential energy is also present. Then you are oscillating. Oscillating, that means you are moving, that means you are storing kinetic energy as well. A is your answer. Repeatedly, your gravitational potential energy, kinetic energy, and elastic energy are increasing or decreasing. Let's further move ahead. A car has a kinetic energy of 620 kilojoules. The car brakes and stops in a distance of 91 meter. What is the average braking force? You have to calculate the average braking force. How will we do that? बेटा हम रियलाइज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स. अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? 620 किलो जूल, 620 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 3. व्हाट विल बी योर वर्क डन अगेंस्ट द ब्रेकिंग? फोर्स ऑफ ब्रेकिंग इनटू द डिस्टेंस ट्रैवल, दैट इज 91. फोर्स ऑफ ब्रेकिंग किस तरह आ जाएगा? 620 10 इज द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 91. फोर्स ऑफ ब्रेकिंग निकाल लो बेटा, क्या आता है? 620 10 raised to the power of 3 divided by 91. Force of braking comes out to be 610 Newton. That comes out to be 6800 Newton. The diagram shows a deep reservoir formed by a dam. Okay. On what does the pressure at x depend? बेटा यहाँ पे जो pressure है at x, ये किस पे depend कर रहा है? Pressure due to a liquid is equals to rho gh. प्रेशर आपका डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड डेप्थ पे भी डिपेंड कर रहा है. विच ऑप्शन इज गिवन हियर? द डेप्थ ऑफ द वाटर एट पॉइंट एक्स इज योर आंसर. नो अदर ऑप्शन इज गिवन, सो वी विल टेक ए. अच्छा जी, a sealed rigid container has a fixed volume. Make sure this is important. The container is filled with air. The container is placed in a freezer and the temperature decreases. बेटा अगर आपका temperature decrease होगा, what will happen? Kinetic energy decreases. Kinetic energy decrease होगी, velocity decrease होगी. Which row correctly describes what happens to the air in the container? बेटा अगर आपके कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ एयर पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग. ऑप्शन सी और ए कैंसिल आउट. What about the average distance between air particles? Can you realize we are at fixed volume? अगर आपका वॉल्यूम फिक्स है तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल हैव नो चेंज. डी इज योर आंसर. Two open containers are filled with water at room temperatures. The containers have different shapes. From which container does the water evaporate at the greater rate, and how can the rate of evaporation be increased? बेटा कैन यू रियलाइज कंटेनर ए का सरफेस एरिया ज़्यादा है, दैट्स वाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम दिस कंटेनर विल बी ग्रेटर. ठीक है, ऑप्शन सी और डी कैंसिल आउट कर दो. सेकेंडली, हाउ कैन यू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम कंटेनर वन? यू कैन इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर टू फर्दर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. बी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. दिस थर्मोमीटर क्वेश्चंस आर नॉट इन योर सिलेबस, एक्सक्लूड दीज. Latent heat of vaporization is also not in your syllabus, exclude these. A glass container, a glass contains an ice drink on a warm and humid day. ठीक है, यहाँ पे एक ice drink है in this glass. Let me mark it as well. इस पूरे ग्लास में एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक है या ठंडी ड्रिंक है. Water starts to form on the outside. Okay, water is starting to form on the outside. This process is what? This process is the process of condensation. What happens in the process of condensation? Water vapors from the surrounding. बेटा सराउंडिंग से गैस पार्टिकल्स आते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं, द गैस कूल्स डाउन इनटू अ लिक्विड.
This process is known as condensation. A is your answer. अच्छा जी, one end of a copper bar is heated to a high temperature. Okay. Which mechanism is responsible for the transfer of thermal energy to the other end of the copper bar? बेटा copper bar में throughout energy किस तरह transfer होती है? Copper bar is a metal. In a metal, there are two methods of thermal energy transfer. Lattice vibration of copper ions and the movement of high energy electrons. B is your answer. आगे बढ़ते हैं. The diagram shows a convection current caused by a piece of ice placed in a beaker of water at room temperature. अच्छा जी, आपके पास ये एक ice है, ठीक है, that is placed at room temperature. What will happen? इस ice की वजह से जो cooler water होगा that will sink to the ground. बेटा cooler water will sink to the ground and hot water will rise to the top like this. ये hot है water and this is cooler water that is sinking to the ground. ठीक है. State what is the temperature of water at P? The water at P is cooler. That's why the temperature of water at P is lower than at Q. What about the density of water at P? Always remember cooler water has a higher density. Cooler water is more dense compared to hot water. So the density is higher than at Q. C is your answer. Let's further move ahead. The diagram shows a wave, okay. Which rho is the amplitude of the wave and the wavelength of the wave? Amplitude is always the distance from the mean position to the maximum position. Your amplitude here is 1 centimeter. Wavelength is the distance covered by one wave, that is 8 centimeter. 1 और 8 का कोई option है? B is your answer. Let's move ahead. A sound wave is created by a loudspeaker that vibrates back and forwards 96,000 times per minute. बेटा आप 96,000 दफ़ा वाइब्रेट कर रहे हो पर मिनट, दैट इज यू आर वाइब्रेटिंग 96,000 टाइम्स इन 60 सेकेंड्स. 1 सेकेंड में आप कितनी दफ़ा वाइब्रेट करोगे? एक्स. कैन यू कैलकुलेट दिस? 96,000 डिवाइडेड बाय 60. बताओ ये आंसर क्या आ रहा है? 9600 divided by 60. This comes out to be 1600. 1600 hertz is your frequency. बेटा 96,000 टाइम्स आप वाइब्रेट कर रहे हो इन 60 सेकेंड्स. एक सेकेंड में कितनी दफ़ा वाइब्रेट करोगे? 1600. 1600 hertz is your frequency. What is your speed of sound? 320 meters per second. Can you calculate the wavelength? V is equals to f lambda. V क्या है? 320. फ्रीक्वेंसी क्या है? 1600. वेवलेंथ निकाल लोगे. 320 डिवाइडेड बाई 1600. What is your wavelength? 320 divided by 1600. This comes out to be 0.2 meters. A is your answer. आगे बढ़ते हैं. A card is placed in front of a plane mirror so that the label is facing the mirror as shown. अच्छा जी, ये label mirror को face कर रहा है as shown. How does the image of the label formed by the mirror appear to the observer? हमेशा याद रखो, in a mirror the images become laterally inverted. ये I C की जगह पे आ जाएगा, C I की जगह पे चले जाएगा. C is your answer. Always remember, in a mirror the images become laterally inverted. Left right हो जाता है, right left हो जाता है. A thin converging lens can produce both real and virtual images. Which row describes a real and a virtual image? Real image कौन सी होगी? In which rays converge to form an image? C or D cancel out. Virtual images कौन सी होंगी? That cannot be projected onto a screen. B is your answer. आगे बढ़ते हैं. The speed of light in air is this. The critical angle for a light in a transparent plastic material is this. This is your critical angle. अच्छा जी, can you calculate the refractive index of the plastic? 1 over sine of C. 1 over sine of 37. Can you calculate the refractive index by? 1 divided by sine of 37. This comes out to be 1.66 is your refractive index of plastic. Refractive index of plastic आ गया. Now you have to calculate the speed of light in the plastic. How will you do that?
Refractive index of plastic also has another formula. Speed of light in air divided by the speed of light in plastic. Refractive index of plastic पता है? Yes, 1.66. The speed of light in air पता है? 3 into 10 is the power of 8. Can you calculate the speed of light in plastic? Yes, I think we can do that. The speed of light in plastic is equals to 3 into 10 raised to the power of 8 divided by 1.66. Let's put this in the calculator. The answer comes out to be 1.8. 10 raised to the power of 8 is your answer. आगे बढ़ते हैं. Which part of electromagnetic spectrum is used by a remote controller for a television? Infrared waves is your answer. Which statement compare the radio waves and X-rays? The radio waves have a longer wavelength. Yeah, that's correct. C and D option gets cancelled out. Radio waves की wavelength हमेशा X-rays से ज़्यादा होगी. And both X-rays and radio waves will travel at the same speed, that is 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second. ठीक है, radio waves and X-rays will travel with the same speed because they are electromagnetic waves. आगे बढ़ते हैं. A student counts how many iron pins an electromagnet picks up when its power supply is switched on. Then she counts how many pins are picked up when the power supply is switched off. ठीक है, switch on जब कर रहे हो तो कितनी pins pick up हो रही हैं और switch off कर रहे हो तो कितनी pins pick up हो रही हैं. She measures that. She repeats the experiment using cores made of different materials. The results are shown. Which core is made out of soft iron? तो बेटा हमेशा याद रखो, soft iron is the best temporary magnet. Soft iron is the best temporary magnet, or you can say soft iron is the best electromagnet. If you are the best electromagnet, क्या होगा? When you close the switch, जब आप स्विच को क्लोज ऑन करोगे, पावर सप्लाई को ऑन करोगे, soft iron will pick up the maximum number of iron pins. And when you switch off the power supply, you will pick up none of the iron pins. Due to soft iron being the best of magnets, D is your answer. A plastic rod is brought close to a small plastic sphere supported from a strand. The sphere is repelled. हमेशा याद रखो repulsion कब होगी? When you have like charges. A is your answer. Which unit is equivalent to a volt? क्या आपको ये याद है? Voltage is equals to work done over charge. Work done के क्या units हैं? Joules. Charge के क्या units हैं? Coulomb. तो volts is also equal to joule per coulomb. B is your answer. A resistor converts 360 joules of energy when there is a current of 3 ampere in it. Potential difference is this. For how long is there current in the resistor? You have to calculate time. किस तरह करेंगे? Energy is equals to IVT. Energy क्या है? 360. Current क्या है? 3. Voltage क्या है? 6. You have to calculate time. 360 divided by 3 into 6 is equals to your time. What does your answer comes out to be? 160, 120. Answer comes out to be 20 seconds. B is your answer. आगे but this is not in your syllabus. Exclude this. आगे बढ़ते हाँ, let's see this. The diagram shows a circuit of 6 identical lamps connected to a battery. Okay, 6 identical lamps है, इसका मतलब क्या है? Resistance R, 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 R. Which lamps are the brightest? Obviously, कौन सा lamp brightest होगा? Now imagine this is a series circuit बेटा. यहाँ पे आपका current I है. This lamp receives complete current I. The voltage in P किसके इक्वल हो जाएगा? I into R. अच्छा, अब जब ये करंट यहाँ पे आएगा, it will get divided into two branches, I over 2. I over 2. What will be the voltage across Q and R? Voltage across Q and R क्या हो जाएगा? Current, that is I over 2 into the resistance R. फिर जब करंट यहाँ पे आएगा, it will get divided into 3 branches. तो I over 3, I over 3, I over 3. What will be the voltage across Q? I over 3 into R. सबसे ज़्यादा voltage कहाँ पे होगा? When you have a single lamp. क्यों? क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा voltage है? Because the current is not getting divided. If the voltage across lamp P is the greatest, lamp P will also light up the brightest. A is your answer.
This is not in your syllabus, unfortunately. आगे बढ़ते हैं. Let's see this. A magnet is dropped vertically through a solenoid. This induces magnetic poles at both ends of the solenoid. ठीक है. Which magnetic poles are induced at position X in diagram 1 and diagram 3? चलो जी हम देखते हैं भाई diagram 1 और diagram 3 में कौन से poles induce होंगे. First of all, remember Lenz's law. Lenz's law क्या कहता था? Induced current always flows in a direction so as to oppose the change causing it. So as to oppose the change causing it. अच्छा जी. यहां पे आप देख रहे हो यू आर पुशिंग द मैग्नेट डाउनवर्ड. आप अपनी तरफ से मैग्नेट पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हो. According to Lenz's law, the current will flow in such a direction कि सोलोनॉइड मैग्नेट पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा. इफ द सोलोनॉइड इज अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स ऑन द मैग्नेट, ये साउथ पोल है तो ये भी साउथ पोल हो जाएगा रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से. यू विल हैव एन अपवर्ड फोर्स और अ फोर्स दैट ऑपोजेस द इनिशियल फोर्स. ऑप्शन सी एंड डी कैन बी वन ऑफ योर ऑप्शंस. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ डायग्राम 3 पे. डायग्राम 3 पे आप मैग्नेट को कहाँ मूव कर रहे हो? यू आर मूविंग द मैग्नेट डाउनवर्ड. तो सोलोनॉइड क्या करेगा? सोलोनॉइड या फिर करंट इस तरह फ्लो करेगा कि इट विल अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स. दिस इज नॉर्थ पोल. हाउ कैन आई अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स हियर? बाय इंड्यूसिंग अ साउथ हियर. देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे. अगर यहाँ पे साउथ है तो इस पॉइंट एक्स पे क्या होगा? नॉर्थ. इफ वन पोल ऑफ द सोलोनॉइड इज साउथ द अदर विल बी फॉर श्योर नॉर्थ. सी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं बेटा. Which transformer can charge a 240 volts AC input into a 15 volts AC output? अच्छा जी. आपको प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है. कैन यू कैलकुलेट VP over VS? Yes, 240 divided by 15. This is equals to 16. Do you remember VP over VS is equals to NP over NS? चलो देखते हैं. कौन सा ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसका NP ओवर NS विल बी इक्वल टू 16? लेट्स सी. ए को देखो. ए में NP क्या है? 800. NS क्या है? 40. डिवाइड कर दो. दिस कम्स आउट टू बी 20. नॉट वन ऑफ आवर ऑप्शंस. बी को देख लो. बी में आपका NP क्या है? 1000. NS क्या है? 25. 1000 over 25. व्हाट डज योर आंसर कम्स आउट टू बी? यहाँ पे आपका आंसर 40 आ रहा है. नॉट व्हाट वी नीड. सी को देख लो. NP दैट इज 2400. NS इज 15. डिवाइड कर दो. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 160, विच इज नॉट आवर आंसर. डी पे आ जाओ. 1200 डिवाइडेड बाय 75. दिस इज इक्वल टू 16. दिस इज आवर आंसर. तो हमने क्या किया? First of all, we took the primary voltage divided by secondary voltage. The ratio of primary divided by secondary voltage comes out to be 16. फिर हमें ये पता है प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स. इसकी क्या वैल्यू आ रही थी? 16. NP ओवर NS इज इक्वल टू 16. ठीक है. तो हमने देखा किस ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज इक्वल टू 16. डी इज योर आंसर. सिंपल. What is the purpose of split ring commutators in an electrical motor? भाई split ring commutators का क्या purpose होता है? To ensure that the turning effect on the motor remains in the same direction at all times. D is your answer. How do the sizes of two nuclei produced in nuclear fission reaction compare to the size of the original nuclei? हमेशा याद रखो जो fission reaction में nuclei produce होते हैं in the reactants are always smaller. Both are smaller than the original nuclei. C is your answer. Which statement about radioactive decay of a substance is correct? It cannot be predicted when a particular nucleus will decay. The radioactive decay is random in nature. Perfect. The diagram shows a stream of beta particles traveling in a line that passes between the poles of a magnet. In which direction will the beta particles be deflected? हमने direction of force निकालनी है.
we have to calculate the direction of force. How will we do that? जब भी हमने direction of force निकालनी होती है, which law do we apply? Fleming's left hand rule. Now just focus on the board. I'm opening up the camera. Fleming's left hand rule किस तरह लगेगा? This is your left hand. Magnetic field is pointing downward. Your beta particles are pointing towards the right. बेटा beta particles क्या होते हैं? Negatively charged. Always remember that the direction of current is opposite to the direction of negative charges. The direction of current left side पे आ जाएगा. Why on the left side, not on the right side? Why? Because you have negative charges moving towards the right. Current always moves opposite to the negative charges. Your force points out of the page. D is your answer. यहाँ पे key point भी लिख लो. Direction of current is opposite to the direction of negative charges. Simple. I hope this makes sense. This marks the end of the paper. If you have any questions, you can ask right away.